network routing to ensure high availability in case of engine failures. Then coming up to monitoring resources, implementing elasticity and availabilities. Like if we talk about monitoring distributed application components, so there are three components like operational health, resource utilizations, application performance, and the best service for monitoring is like a CloudWatch. So CloudWatch it collects and track the metrics for AWS services across the region in a metric repository, and it also collect the logs by using CloudWatch logs. It support built-in AWS service matrix or the custom matrix. It calculates the statistic from the matrix and display the graph of this matrix statistic, and it provide the alarm for responsive event-driven architectures, and it also provide notification to make changes to monitor resources. So it will take it. It will basically CloudWatch will keep a track of all the services which will be running on your cloud environment, and it will be keep in like alarm, like if any failure is coming or any fault is coming. So there will be an custom and alarm matrix where it will be notified, and in this particular matrix. Basically, there will be a calculation of statistic for all the services, and it will also, for representing to the customer or for the, concerning with your all the monitoring team, it can understand through the graphical strategy as well. So it plot or it display with the graph of all the statistics matrix which will be used on this cloud platform. So here you can see the cloud was matrix and log collections. Like we have the AWS resources, and there will be a log and a custom resources. There you'll see there is a CloudWatch running. So under the CloudWatch, basically there will be a matrix, logs, all those things, and there will be a metric repository, right? So on there, if you see under the matrix, so it set the data point with the timestamp and also standard or high resolution data or what are the dimensions of that all the data. So everything which will be keep under the namespace matrix. Just look at here about the CloudWatch alarm. So here there is an alarm for regular. There is a one is called the regular alarm or the high resolution alarm, and it will be kept under the repository matrix repository. So there are two things, like one is used for SNS, that is simple notification service. And number, there will be alarm for any particular service. It should be notified. So for that SNS that you need to enable on the cloud platform. So it is a kind of notification service, and it will connect it to the topic subscribers. Now, another thing, like if you use auto scaling policy on EC2 instances, so at any point of time you want to scale up your resources or your any server-based compute services, so you'll enable ELB, auto scaling policies, or elastic load balancer. Now, if you see about the CloudWatch dashboard, so under it there will be alarm, metric repository, and statistics. And two things will be there. Only the custom dashboard, another will be a management console, CloudWatch dashboard.
So if we'll move to the next, like there are two things in this cloud services. One is Event Bridge, another is CloudWatch. So here if you see under the Event Bridge, so like it process the event with an event bus or a pipe. Like one is the if we'll talk about that Event Bridge, so under it there will be the pipe or as a kind of point-to-point integration between one source and the target. Then it will be deals with the event buses, which are routers that receive a event and optionally deliver them to one or multiple targets. And the second point, like this is all about the process event with an event bus or a pipe. If we talk about that routing decisions with configurable rules, so in this case, you'll find the rules runs based on the matching an event pattern or an the schedule with Amazon Event Bridge scheduler. And another thing is like the target can be in another AWS account in another region or in the both regions. So the target can be the different regions or different zones, right? So here you can see like there is a event bus where we are connecting to all the AWS services like event bus scheduler, where there will be a default event bus like event one and rule. There will be a event two and a rule for that particular respective event. And rule three is used for the AWS Lambda function. Then we have SNS topic and CloudWatch logs. So this event breeze, or we can say that it's a kind of the bus event bus, or it will be connected to the CloudWatch logs. So this is the log is a part of CloudWatch, right? SNS topics also we have discussed in the CloudWatch. It's used for the notifications, right? To the services that we have just now discussed, like simple notification service. So that will be used here as well in case of event bridge. That is your SNS topic that is called as a. If you see about the monitoring your resources cost, so you have to focus on the cost explorer, the budget, and cost and use report. That will be created like if you use the monitoring on your resources based on the cost. So just have a look for the key takeaways, monitoring your resources. Let's move to the next topic. I hope you have gone through the key takeaways. It's scaling your compute resources. Now we'll see about this. The need for reactive architecture. The application need to handle large amount of data with the sub-second response times while having close to 100% uptime. Like you have to focus on elasticity, responsive, resilient, and massive resilience. So here, if you see to achieve the elasticity with scaling. So elasticity is the ability of infrastructure to expand and contrast as capacity requirement change. As per our requirement, you have to scale up or scale down. So this is a kind of what elasticity, flexibility you will find. Like at any point of time, it can be expanded, it can be contrast. Right, this can be done. So that is the part of elasticity, which is used on the cloud as well. So it's a basic fundamental things like you can understand elasticity. What is it? So it's a kind of flexibility
Now, if we talk about the scaling, so scaling is a kind of ability to increase or decrease the component capacity of your applications. It can be a vertical scaling that can be replaces resources with different size resources, or it can be a horizontal scaling that can add or remove the resources available to the applications. So scaling up or scaling down, that you know that. So here you got the new things about the, it can be a vertical, scaling can be a vertical or it can be a horizontal. So make sure that when we talk about the vertical scaling, so it will replace the resources with a different size resources, right? And when we'll talk about horizontal scaling, so it will add or remove resources available to the applications. So adding or removing is a part of horizontal scaling, or replacing replaces the resources with a different size resources. जैसे मान लो सीपीयू एक है जिसका 4 कोर आई मीन 7 कोर प्रोसेसर तुम यूज कर रहे हो, उसमें 5 वर्चुअल सीपीयू है एक जोन के अंदर। तो तुमको अगर 5 सीपीयू वर्चुअल सीपीयू से ज्यादा चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, तो आप जो है उसको रिप्लेस कर दो, राइट। तो वो प्रोसेस जो होता है वो वर्टिकल स्केलिंग होता है, आप रिप्लेस कर दो। लेकिन अगर एग्जाम्पल ले लो कि हमारे पास ऑलरेडी रैम है 32 GB का, और आप जो है उसको रिप्लेस नहीं कर रहे और भी रैम ऐड कर दे रहे हो, 64 GB ऐड कर दिए, तो वो जो होता है प्रोसेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का होता है। ओके, so now you will move ahead with the EC2 auto scaling. So that is based on like managing a logical collection of Amazon Elastic Compute Cloud instances, that is called as a EC2 auto scaling group across the availability zones. So launches or retires the EC2 instances configured by the launch templates and resize based on event from the scaling policies, load balancer, health check, notification, or scheduled actions. So like, you can resize the instances. You can scale up policy, you can use that. Scale down policy also you can also use load balancer. You can add the multiple instances. You can divide the load with the instances. Everything that can be done through the auto scaling policies. It can integrate with the elastic load balancer, that is called the elastic load balancing, to send a new instance registrations and receive the help notifications. Like one of the instances down or is not responding on time, right? So it should be checked with the like cloud watch alarm, that is the one of the monitoring services, and accordingly SNS will send a notifications like it's about the health, like this instance is not running properly. So you can give the instance in rest, and you can operate with the other instance, right? So that thing can be done on the cloud as well. The balance is the number of instances across availability zones, and it's available free of charge, like auto scaling policies. This is the job of that service provider, that it can be dividing with the multiple instances. Your load can be. Now, if you see auto scaling group components, so what are the things coming under this auto scaling group component? One is like capacity, launch template, load balancer, and a scaling mechanism. Then capacity, like it's a minimum instance or maximum instance, desired instance, how many instances that will be required, right? That will be look under this section in this particular group. Then when we'll talk about the launch template, so it focuses on the instance configurations, the AMI and the versions. AMI, everything we have discussed earlier. Amazon machine image, where it will be a collection of operating system ISO image file. Then there will be a load balancer, which will receive a load and balancer health checks, and it will be divided with the multiple instances, and it register a new instance with the load balancer. Like if you are running one instance, and along with the load balancer, you have registered the multiple instances, so that if there will be a huge load with the one instance, it can share that, it can distribute your load with the other instance. So for that, you have to register with the load balancer. Your instances, the new instances, whatever they are in the environment, it should be registered with the load balancer, so that it can share that, I can distribute your load with the other. Now, if we'll talk about a scaling mechanism, so it is scheduled actions, dynamic scaling policy, it uses predictive as scaling policies. So all this thing that is coming under the
your scaling mechanism. Schedule action is just like you have decided that after that much of period of time you'll scale up, or you'll use some other instances. So it is a prior scheduling mechanism. You can go ahead, or dynamically you are scaling up. Like there is a kind of policy you have enabled. Like at any point of time, if there is a huge load, immediately your services will be scaled up. Right? That is dynamic. A pre reactive scaling policies is a kind of, you have already decided. I mean, you have discussed with the client and you have given the period, for this period of time that much of size of RAM or storage you are providing, and after that period of time, after that completion of your tenure, you'll go ahead with this policies, right? So that kind of thing that is coming in the reactive scaling policies. So here you can see with the some block diagram or architecture, there is a horizontal scaling with the Amazon EC2 auto scaling groups. So that we have seen, like I have told you earlier, like horizontal, there are two types of scaling, horizontal and vertical. So if you are removing something, you are coming up with a new one, right? Or you are adding some new resources, that is a part of your horizontal scaling. But if you replaces with the some of the services or some of the resources as per the requirement of the user, so that is a part of vertical. So if you see about the horizontal scaling with Amazon EC2 auto scaling groups, the group desired capacity 2, maximum capacity will go up to 3, minimum capacity is 1. So like you see, like initially the ELBB connected with the elastic load balancer with a single instance, that is also auto scaling group, and then scale up to reach the minimum capacity of one instance. Like initially there was a two instance, right? So that was the auto scaling group we have, that is the desired capacity with the two instance you have configured, and also it connected with the ELB, right? तो मैक्सिमम अब तुम पहले डिसाइड कर लोगे क्लाइंट के साथ कि कितना आपका लोड जा सकता है मैक्सिमम, उसके हिसाब से आप इंस्टेंस को रजिस्टर कर दो ईएलबी के साथ, राइट? तो जैसे दो है, दो से तीन हो सकता है सपोज, तो 1 और 2 तो है, उसके साथ एडिशनल तुमने ये इंस्टेंस 3 को एक ऐड किया है, तो उसको ऐड करोगे ईएलबी के साथ रजिस्टर्ड कर दोगे इलास्टिक लोड बैलेंसर के साथ EC2 3 का। जब भी इन दोनों पे ह्यूज लोड पड़ेगा तो ये वो लोग अपना लोड को डिवाइड करेंगे EC2, आई मीन EC2 3 के साथ, इंस्टेंस 3 के साथ. So that is the kind of auto scaling groups and the policy that you have connected with the ELB. But there will be maybe also chances like you are not using all the resources. So unnecessary two instance why you use? You can reduce to the one instance, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिक्वायरमेंट कम पड़े, बहुत कम पड़े, तो आप एक ही इंस्टेंस से काम चला सकते हो. तो ये मिनिमम आपने कैपेसिटी डाल रखा है क्या, वन का भी. So this is the kind of what horizontally. Now what you are doing horizontally, you are adding something and some resources that you are reducing it. So that is the concept of horizontal scaling. The EC2 auto scaling mechanism, the schedule action dynamic policy, I have already explained. Predictive policy says schedule action is a scale based on a date and time के साथ होगा, और predictable workload. दिस इज ऑफ द schedule एक्शन, मतलब जिसको प्रोडिक्ट कर लोगे पहले से, और उसके हिसाब से जो है आप स्केल अप पॉलिसी को एनेबल करोगे. और डायनेमिक पॉलिसीज क्या होगा, स्केल बेस्ड ऑन द ट्रैक मैट्रिक्स एंड आर ऑफ मॉडरेटली स्पाइक वर्कलोड. लाइक सडन अगर ज्यादा वर्कलोड हो गया तो आप ये पॉलिसी ले सकते हो, कभी भी आपको स्केल अप स्केल डाउन कर सकता है. और प्री डायरेक्टिव पॉलिसी जो है, और प्रिडिक्टिव पॉलिसी जो है, बेसिकली स्केड्यूल पॉलिसी जो होता है, एक तुम लोग अभी देखे हो कि लाइक आर द काइंड ऑफ यू नो predictive table that or predictable that workload when you will follow it. So on there you see like there was a date and time that will be based on that, you'll scale up or scale based on that date and time, that policy you will follow. And as per the need of the customer, you have been decided that okay, after this duration of time or after that date, right, you are going to scale up or scale down, because on that period of time maybe the requirement will be less, so it will scale down, or if it will be more, you will scale up, right? So this is the kind of what predictable workload. On that basis, you are doing the
scaling. This is called as the schedule actions, or that policy is called as schedule policies. But when you go for predictive policies, so in this case, like skills based on like previous traffic patterns with machine learning, like how from the in the past, like how the load were on the instances, or all the resources which you have configured on the cloud environment. So you have to, based on that, you have to predict, and accordingly you have to allocate the resources, and you have to do the scaling, right? So this is all about the previous traffic pattern that you will follow in this mechanism, or it uses the machine learning algorithm. Like that the supervised and unsupervised learning in the machine learning, there will be some predictions with the some label and unlabeled data, right? So if you'll go ahead with this, some of the resources which earlier, how on that particular period of time, how the spike was, right? So accordingly you have to decide, and accordingly you have to scale up the resources. And it is also for the workload traffic that can be predict or predicted with the pattern. So like in future, what kind of things can happen? So you have to forecast it. Like you have to just, uh, you know, you have to predict the things. It is not exactly is going to happen, may or may not be. So we don't know about that. So you have to just predict, right? So accordingly, you have to allocate the resources, and you have to manage the traffic. So this is a kind of what predictive policies that follow on the cloud environment. And when you go for the scaling with the steep scaling policies, where you'll see the metric values that is less than 30%, 30 to 39%, 40, 60%, 61 to 70, and 71 to 100%. Where you will see the percentage capacity change, like it removed the 30% of current capacity. In this case, it can remove the 10% of current capacity, then it can be added, can be also added. So this is a kind of scaling with the step scaling policy, in the sense of either it can be increase capacity, it can be decrease, and it can be maybe with the same values. I mean, there will be no changes on there. So like that way, you can understand that how the requirement is increasing where, and where it is decreasing. Now, if you'll come up with the AWS scaling options, so on there you will find there are two things. One is auto scaling, and on the application auto scaling, right? So in case of auto scaling, you use a scaling plan to configure auto scaling for the multiple resources. And when you go back with the scale multiple AWS resources, so either you can scale up with the Amazon Aurora, that will be generally used for the database and all. Then for the compute service, you can go ahead with the EC2 auto scaling, or for container-based services, you can go ahead with the ECS, or if you know there's some database services requirement. So on there, you can go ahead with a DynamoDB, and you can use that scaling policies. And if we'll talk about the application auto scaling, so on there, you can scale the multiple resources with the target tracking, or step scaling, or a schedule scaling. So scale the multiple resources based on that. Now, maybe you'll use a service like auto scaling services, or Lambda function, or SegMarker, uh, right? Or that is called as a Elastic Cache for Redis. And there is also Amazon SegMaker. So these are the different application-based auto scaling policies. So you can enable it. Now, just see the creating a scaling policy for Amazon EC2 auto scaling. Just have a look for the demo about that. This demonstrator uses the EC2 auto scaling, and in this demonstration, you will see how to do the following things. So like if we'll talk about that auto scaling policy for EC2, right? So basically you have to create, first of all, you need to create an instance, create and launch that EC2 instances. Then you'll enable, auto scaling groups, or you'll create a particular auto scaling groups, and then you'll attach that, policy with the instances, or you'll create a particular scaling policies. So basically what we do, first we instance we used to launch, then we create auto scaling group, and then also we scaling policy that we enable, right? That we create basically. So this is about that EC2. And if you see the key takeaways, scaling your compute resources. So that we have just now we have covered. So just to have a look for this key takeaways.
So that is basically with the EC2 auto scaling, you can create a group to manage the logical collection of EC2 instances. That is called as EC2 auto scaling group. And when you talk about EC2 auto scaling in second part, like where a group, has the capacity that can be, minimize, and that under the setting, like you can maximize or you can go with the desired number of instances that will be required as per the clients, right? And it can run that particular application on that instances, right? So this is what basically the second cases that you can understand on the EC2 scaling policies. Then the third thing is like the group size. It can be scale in and out with the schedule options or schedule actions. Then we can go ahead with the dynamic plus policies or a schedule action policy you can enable, or predictive policies you can enable, right? So these are the various type of policies that we can go ahead with this in the auto scaling policies, right? Then it will come up about the auto scaling cases in the applications. So like you can scale the more services than the EC2 instances, and you can use that auto scaling or application auto scaling in case of your ELB, like you are enabling elastic load balancer or auto scaling policies in the instances, right? So at the end, you are running an application on top of your instances, right? So you have to also go ahead with the auto scaling policy of your applications. Like as we have discussed, there are various services which is based on the application and based on the instances, right? So accordingly, you need to enable. Now, if we talk about the scaling your database, right, for implementing, monitoring, elasticity, and high availabilities, right? So in this case, you will use the DynamoDB, RDS, Aurora, right? So these are the various database services which are available on the cloud platform that we have already discussed earlier. So again, just have a quick revision of all the database. So like if we talk about the database scaling, so the first case, if you take it like Aurora. So Aurora that has the scale cluster features, like you can go ahead with the vertical scaling with the instance type, and you can go ahead with the horizontal scaling with the read replicas. You can enable the service manager storage scaling, or when you go for the Aurora serverless, I mean Amazon Aurora serverless database. So on there, it can go with the horizontal compute scaling with the Aurora compute units, that is called the ACUs. The second case, like it manages the services and the storage policies and the storage based on the requirement, like the service manager storage scaling policy, you can take it. When you talk about the RDS, so it also uses the vertical scaling with the instance type and the storage volume size and the type, and as well as horizontal scaling with the read replicas. Then DynamoDB has also policy like horizontal scaling to scale the read capacity with the RCU, that is called as a, and write capacity with the WCU separately, and service manager storage. So mostly all the horizontal and vertical scaling policies that follows all the database services like Aurora, RDS, DynamoDB, and all on. So here you can see the scaling on Aurora clusters, like scale vertically by the changing the Aurora DB instance class or the size, right? So you can look at this architecture. Aurora DB cluster we have, and there are two cases they have considered. One is for the horizontal, another is for the vertical scaling, right? So in case of vertical scaling, if you see, there are the multiple in the particular availability zone. Suppose I am taking the first availability zones. So here Aurora DB instance that has been created. This is the primary storage database that we have created, Aurora primary, that is called as, and which is connected to the EBS volume, that is database copies that you are creating in under the EBS volumes. And when you'll go for this is the kind of what, it's a vertically you are scaling up your resources. जैसे यहाँ पे एक database create किए, ये उसको store कर रहे हो EBS volume में, इसका copy create करो, तो ये vertically हमने क्या किया, इसको enhance करता, इसको
मतलब इसको स्केल कर रहे हैं। बट इस केस में अगर देखोगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में, हॉरिजॉन्टल के स्केलिंग में क्या होता है, बेसिकली ऐड करते हैं हम लोग। जैसे अरोरा डीबी इंस्टेंस 3 है, अरोरा रेप्लिकास है, ईबीएस वॉल्यूम्स का कॉपीज तो है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी हम अगर डीबी इंस्टेंसेस इसको ये कॉपी के लिए ऐड करते हॉरिजॉन्टली, आई मीन वी आर एडिंग सम मोर रिसोर्सेस to this ability zone, so that will be considered in the scale horizontally by using aurora auto scaling to manage the number of read replicas. यहाँ पे देख सकते हो, that is the kind of cluster of volumes that they have created, that is the EBS volume for each and every database. देखो EBS database जो है एक cluster volume है, cluster of resources that you are allocating with the services EBS, which will be helping your main database, right? तो ये जो है प्राइमरी हो गया, ये रेप्लिका है 1 और 2। ये बेसिकली हम लोग अगर यूज करें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पॉलिसीज, ये हमारा प्राइमरी डेटाबेस है, दैट इज योर अरोरा डीबी इंस्टेंस 1, और उसका रेप्लिकास हम लोग ईबीएस वॉल्यूम में क्रिएट कर रहे हैं। लुक एट दिस लाइक स्केलिंग एंड अरोरा सर्वरलेस क्लस्टर्स। तो इसका केस अगर लोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट इज यूज लाइक एज पर द zone or respective zones having the different multi-agent DB clusters that we have. Like we are implementing the Aurora automated horizontal scaling by specifying the minimum and maximum cluster Aurora capacity unit, that is called as the ACU. Then in the second case, each reader and writer scales between a minimum and maximum cluster ACU. So you can see ACU is about that, you know, scaling up this like your minimum and minimum and maximum the cluster that you're using it. So in this case, basically arrow just if we'll talk about ACU, so ACU just based on your Aurora, just make sure that it's a implementation on the Aurora clusters, right? It's a serverless cluster. So it will be focusing on like automated horizontal scaling. Uh, this is what horizontal automated scaling, and which will be based on maximum and minimum clusters capacities, right? So that you have to focus on this. So here you will see in the previous case, it is similar to that. Only the thing is a reader that will be added in ACU with the each and every zones. And because this is based on the write, this is for the read, and this one is for the write, right? The write ACU, 10 ACU suppose you have created, and this is for the first zone. And similarly, there will be a, in the cluster, like you have added with the multiple readers, reader 1, 2, 3, and accordingly you have assigned with the ACU, right? So when you talk about the last case where you are creating a cluster volume, like EVS volume for the data copies and all, right? So it's a star and stop cluster for intermittent workload. I mean, if any point of time, if there will be a huge workload, right? So immediately when the cluster of this particular volume, like if we'll take an example of EVS, right? So this is a kind of when there will be a huge workload. So accordingly, it will be created in backend, and it will be giving support to the different what that ECUs, and which will overall it is all about that what you are creating a DB clusters. If we'll see here the scaling and Amazon RDS database, so this is a kind of relational database, right? So we have the two things. One is RAID replica database and another is primary database. So the scale vertical by changing the DB instance, class, or the size. So synchronous asynchronous data replications that you will be used here. Like one is for the Amazon RDS primary DB instance you are using. Here is like elastic block storage, that is EBS volumes for this. For each and every database there will be a EBS, because at the end you are storing in somewhere, right? All your data. So for that, suppose you are creating any instances, so there will be a root volume. So root volume is what it is usually the EBS volume, and each and every DB will be kept in this EBS block. So for that, there will be a copy, or you can say that there is a backup for this all the database. So in this read and write,
whenever you'll use that kind of asynchronous data replication policies. So accordingly, like read replica database and primary database, so it will be connected with one another. It's a kind of, it will provide a backup to this particular main database or the primary database. This is about the RDS we have seen. Now we can go over DynamoDB, scaling a DynamoDB table. So read and write both policy that will be done. So here, DB global secondary index, DB, DynamoDB base table we have, and RCU and WCU. That is for the read and write. Make sure that you're understanding this WCU and RCU. And DynamoDB auto scaling policies. Our main goal is what is providing auto scaling, right? And it should be monitored. And when you will provide that, when it will be scale up, when it will be scaled down, that should be done right from the backend. So there will be a auto scaling policy that should be enabled, or it should be created to that instances. And also you'll be attaching the database to the instance, right? So in this case, if you see this architecture, so there are two parts, like a DynamoDB base table, we have global secondary index, and both are connected to the auto scaling DynamoDB table, or auto scaling DynamoDB your policies that will be enabled, and in backend should be monitored. So for that, you are connecting the CloudWatch, and at the end you are running an application. So application should be also that should also have kind of auto scaling policies that should be enabled to the applications that you have seen in the previous slides. So for this case, we are connecting the auto scaling. So now read this some of the important points, like use on demand capacity mode to activate to let the DynamoDB scale and the table based on the actual read and write. So that we have seen just now. And when you will reduce the load, so on the base table with the global secondary index tables. So for that, you will create that kind of this architecture is showing about this to reduce the load on the base table with the global secondary index. And here is like it used the provisions capacity mode, which change the DynamoDB auto scaling, CloudWatch, and replication auto scaling to adjust that provisions that based on the different traffic patterns. Now you can just compare this AWS database scaling mechanism with the different database like Aurora Serverless, DynamoDB, and RDS. Just have a look. Recording stopped.
Recording in progress. Am I audible, guys? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Actually, in the meanwhile, I got disconnected due to internet discontinuity. So just see, I hope you have gone through this. We were talking about comparison between the different scaling mechanism of different database services like Aurora, serverless, Aurora, then DynamoDB, and RDS. So we have seen if we talk about the scope, so there will be a cluster-based scope for the Aurora, for the serverless as well. There will be the same thing, there will be a cluster-based scope, and then for the RDS, it will be a database approach. I mean, that will be used in case of RDS, and for the DynamoDB, based on the table. Then in the vertical scaling, the instance class or the size that will be used on the Aurora, it use ACU throughput. And for this instance class or size, you'll use that instance class or the size you'll use in RDS, and Amazon RDS storage auto scaling policies, which will be used in case of Amazon RDS scaling mechanism. And in DynamoDB, which is not applicable, horizontal scaling, we have seen Aurora auto scaling for the read replica. This is for the multiple ability zones replicas, read and write that I have used. Read replica for the RDS, and for the DynamoDB on-demand mode, provisions modes, and application auto-scaling policies, global secondary indexes, that all these things have been enabled for this case of DynamoDB. And then we'll talk about the managed by AWS services, the storage scaling policy that will be managed in case of Aurora for the serverless storage scaling. And for the RDS, it is not applicable. And again, there will be for the DynamoDB, it will be storage scaling policy like a serverless Aurora. So just have a look for the key takeaways. Okay, so next topic is based on ELB. Many multiple times we have discussed, right? Elastic load balancer, how to divide the load, and it registered with the multiple instances when you are distributing the load with the instances. So that thing you can refer to your student guide. ये चीजें मैंने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो होता है हाईली अवेलेबल सिस्टम जो है, जैसे अगर यूजिंग लोड बैलेंसर टू क्रिएट ए हाईली अवेलेबल environment like implementing monitoring elasticity. So in this case you'll see like the percentage of uptime is for the different cases you can consider like maximum downtime per year, the uptime, then equivalent downtime per days, right? And there will be different uptime percentage like 90%, 99, 99.9%, right? 99.99%. The maximum downtime per year is 5.25 minutes only, 99.99 cases, right? And a downtime per day is like 0.86 seconds. So just think of it as just negligible, right? Not even 1 second is downtime per day, है ना? तो इसलिए ये जो है तुम्हारा जितने भी सर्विसेज है वो इसीलिए मोस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं 24/7 हमारा सर्विसेज अवेलेबल है, क्योंकि डाउन टाइम अगर पर डे देखोगे 1 सेकंड का भी नहीं है, राइट? तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल है कि नहीं? तो परसेंटेज में अगर देखोगे अप टाइम, तो 100% कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जनरली नहीं लिखता है।
क्योंकि एक 0.00 सेकेंड का भी डाउन हो सकता है, राइट। इसलिए अगर तुम लास्ट केसेस को लोगे, देखो ये लास्ट वाला जो कंडीशंस है, ये 99.999% जो है तुम्हारा केसेस जो हैं, अ, अगर अप टाइम का परसेंटेज अगर हम ले, उसमें इक्विवेलेंट डाउन टाइम पर डे कितना निकल रहा है, तो वो देखो 1 सेकंड भी है, 1 सेकंड से भी कम है। सोचो, मतलब इतना नेग्लिजिबल डाउन टाइम है। और पूरे साल में अगर देखोगे तो 5.25 मिनट का ही डाउन टाइम होता है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल। 5 मिनट का डाउन टाइम मतलब पूरे साल के अंदर, मतलब इग्नोर कर सकते हैं हम, राइट। एंड ELB इज लाइक इट्स डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये फिर से मैं पीछे वाला पेज फिर से बताइएगा, ये 90% कैसे? ये वाला फर्स्ट देखो, वन सर, फर्स्ट रो। परसेंटेज ऑफ टाइम, ये देखो ऑफ टाइम मतलब ये एक कंडीशन लिया गया है। तुम लास्ट वाले से सब बेहतर समझ में तुमको आएगा। ये अलग अलग कंडीशन लिया गया है कि आपका अगर 90% है तो मैक्सिमम डाउन टाइम पर ईयर कितना, 36.5 डेज, ठीक है। और 2.4 आवर्स जो होता है इक्विवेलेंट डाउन टाइम पर डे हुआ। ये 90% बट ऑफ टाइम देखो, ये 90% ऑफ टाइम अगर हम कंसिडर करते हैं, 99% कंसिडर करते हैं या 99.9% कंसिडर करते हैं, हम अगर लास्ट वाले केस को जाएंगे, देखो इसमें तुमको पता चल जाएगा कि जो सर्विस पर हम लोग पॉलिसी जो होता है ना, देखो ये तुम ले रहे हो अगर, इसका चार्जेस जो कम पड़ेगा डेफिनेटली। अगर तुम बोलोगे कि नहीं मेरे को परसेंटेज ऑफ टाइम चाहिए 99 ये तुम्हारा रिक्वायरमेंट बेसिस से होता है एक्चुअली, ठीक है। तो तुम्हारा अब सर्वर का कितना ह्यूज रिक्वायरमेंट, कैसा तुम्हारा कंपनी है, ये क्लाइंट किस टाइप के हैं, राइट, उसके बेसिस से आप जो है इसके परसेंटेज पॉलिसीज को आप ये कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, राइट। तो जनरली जो मैक्सिमम कंपनियां जो है ये 99.999% वाली पॉलिसी को लेती है। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसे कंपनी हैं जो जिसके ज़्यादा मतलब जो है अभी इनिशियल में कस्टमर नहीं है, और उनको जो है अभी जस्ट स्टार्ट ही किए हैं, राइट। या मे भी हो सकता है अभी अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन अभी यूज कर रहे होंगे रिसोर्सेस, अभी क्लाइंट को साइट में डिप्लॉय नहीं गया है, डिप्लॉय नहीं हुआ है, राइट। तो उस केसेस में ये सब पॉलिसी लोगे तो उसमें तुमको फायदे होंगे। क्यों फायदा होगा? क्योंकि आपका प्राइस कम होगा, समझ रहे हो। मतलब अप टाइम अगर 90% है और डाउन डाउन टाइम पर ईयर है 36.5 डेज का है, मे भी हो सकता है ये जो डाउन जो ईयर मतलब डाउन टाइम है पर ईयर, इस टाइम में आप नहीं कुछ कर रहे होगे रिसोर्सेज को, राइट। तो आप अभी जो मतलब कोई क्लाइंट नहीं है आपका, अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हो, तो आप मैनेज कर सकते हो, उससे उससे आपके पैसे भी बच सकते हैं, राइट। तो आप ये पॉलिसी भी जा सकते हो। कोई कोई है जो 99% पॉलिसी जाएगा, वो उसके कुछ कुछ क्लाइंट हैं, तो अगर 14 मिनट का पर डे अगर डाउन होता है तो मैनेज करने लायक है, वो मैनेज कर सकता है। कोई है कि नहीं उससे भी कम चाहिए उसको, जैसे 86 सेकेंड का है पर डे में, तो वो भी मैनेजेबल है। तो ये सब प्राइस वेरी करेगा इसके इसके बेसिस से। फिर 99.99% जा रहे हो, फिर देखो यहाँ पे डाउन टाइम कम होते जा रहा है। तो जितने ज्यादा हाईली अप टाइम परसेंटेज लोगे तो तुम्हारा प्राइस भी बढ़ेगा, और उसी हिसाब से जो है तुम्हारा ये जो इक्विवेलेंट जो पर डे डाउन टाइम जो चलेगा वो भी रिड्यूस होते जाएगा। तो देखो ये सब टॉप से बॉटम आ रहे हो, देखो सब रिड्यूस हो रहा है। यहाँ भी टॉप से बॉटम जब आओगे मैक्सिमम 36.5 डेज था, उसके बाद देखो कैसे घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे बढ़ जा रहा है, अप टाइम का परसेंटेज हम बढ़ा रहे हैं। अंडरस्टूड? तो ये सब केसेस है। तो सर ये ग्लिच नहीं है, मतलब ये एक फंक्शन है। हाँ, मतलब ये बेसिकली देखो, ये जो है अवेलेबिलिटी, देखो तुम्हारा टॉपिक क्या है यहाँ से तुमको समझ आया, हाईली अवेलेबल सिस्टम्स। मतलब जो सिस्टम जो है 90% जो अवेलेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे समझ सकते हो 36.5 डेज का उसका डाउन टाइम चलेगा पर ईयर में। जो सिस्टम को तुम 99% अवेलेबल कर रहे हो, बट एक्चुअली ये सिस्टम क्या है, ये रिसोर्सेस है बेसिकली, ये सर्विस प्रोवाइडर तुमको दे रहा है, राइट। किस टाइप के रिसोर्सेस तुम ले रहे हो। तो हाईली अवेलेबल मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा ये हो जाएगा 99.99% वाला, जिसमें डाउन टाइम सबसे कम रहेगा, और पर डे में भी इक्विवेलेंट डाउन टाइम अगर कैलकुलेट करें सबसे मिनिमम रहेगा। तो ये सबसे ज्यादा हाईली अवेलेबल सिस्टम कहलाएगा, द लास्ट वन। लेकिन 90% वाला, 99% वाला भी केसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनके भी अलग अलग डाउन टाइम होते हैं, और उनका यूज केसेस कम है, मतलब जिससे
ज्यादा अगर अफेक्ट नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो पॉलिसी को भी ये जो होता है जो अप टाइम, ये हम ले सकते हैं। बट बेसिकली ये सिस्टम का फेलियर्स वगैरह होता है, जो आपका जो है 90% ले रहे हो, तो इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ फॉल्ट आएंगे, जिसमें आपका जो है 2.4 आवर्स पर डे अगर डाउन हो रहा है, तो सोच सकते हो कि बहुत बड़ा ये है, मतलब लॉस हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। या कस्टमर फायर हो सकते हैं उसके ऊपर, कि आपका इतना टाइम तक हमारा जो है जो भी रिसोर्सेस जो हमारा जो रिक्वायर्ड था वो प्रोसेस नहीं किया। तो ये जो डाउन टाइम, ये बहुत रेयर केसेस में आता है। ऐसे लोग अगर ऐसे डाउन टाइम अगर कंडीशन अगर किसी सिस्टम का अप्लाई हो गया, तो ये बहुत रेयर केसेस है। बट मोस्टली जो है ज़्यादातर ये चलता है अप टाइम परसेंटेज 99.99% का। और डाउन टाइम अगर क्लाउड AWS ले रहे हो या जो भी ले रहे हो क्लाउड सर्विस का रिसोर्सेज, तो मैक्सिमम परसेंटेज अप टाइम का जाता है 99.99% वाला। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव एट विद द ELB। ELB अभी हमने डिस्कस भी किया है। बेसिकली इसका काम है कि ट्रैफिक जो भी होगा, लोड होगा, उसको और डिफरेंट इंस्टेंसेस में जो भी अवेलेबल जोन के अंदर हैं, और उसमें रिसोर्स जो भी लोड होगा उसको डिवाइड कर देने का काम करता है। तो इट कैन रिसीव द पब्लिक और प्राइवेट ट्रैफिक, और इट विल मॉनिटर द हेल्थ ऑफ रजिस्टर्ड टारगेट विद द हेल्थ चेक, and route the traffic to only health target and scale based on the incoming traffic. Basically, whenever your instances will be registered with that particular uh, elastic load balancer or auto scaling policies. So accordingly, it will be through the CloudWatch, it will get to know when it will be you have to share the resources with the other instances, because in the backend your health check should be done in the sense of like all the instances should be monitored, all the instances should be checked, like whether it's a functioning properly or not, or any instance is slow responsives coming. So in this case, you can immediately you can shift to other instance. So everything that should be done through the ELB as well. So if we'll talk about the load balancer types, so there will be a multiple load balancer, application load balancer, network load balancer, gateway load balancer, classic load balancer। सबका जो नाम है उसके हिसाब से वो लोड को बैलेंस करेगा। एप्लीकेशन बैलेंसर क्या करेगा, तो बेसिकली HTTP एंड HTTPS का जो ट्रैफिक आता है उसको ये करेगा, तुम्हारा उसके ऊपर जो ह्यूज ट्रैफिक हो उसको बैलेंस करना है, उसको उसको जो है रिड्यूस करना ट्रैफिक को, राइट। उसके लोड को बैलेंस करना, एप्लीकेशन लोड को, मतलब इट इज यूज फॉर HTTP एंड HTTP ट्रैफिक, राइट। बेसिकली इफ विल टॉक अबाउट ELB, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ELB होता है इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर का ही ये सब फंक्शन है एक्चुअली, देखा जाए ये सब टाइप है, मतलब लोड बैलेंसर का टाइप है। और वो नेटवर्क को बैलेंस करना हो, एप्लीकेशन को बैलेंस करना हो, गेटवे को करना हो, या तुम्हारा EC2 जो क्लासिक नेटवर्क्स जो होंगे उसको बैलेंस करना हो, उसके लिए ये सब टाइप्स यूज किए जाते हैं। जैसे if you see all the bullets points, just see here, application load balancer, it is used for HTTP and HTTP traffic, operates at OSI layer 7, राइट। द एप्लीकेशन लेयर्स, मतलब अगर तुम बॉटम से टॉप जाते हो तो सेवेंथ लेयर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर। बॉटम में तुम्हारा रहता है फिजिकल, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क आ जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट आएगा, फिर तुम्हारा क्या आता है, सेशन आता है, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन आएगा, राइट। तो सेवेंथ पोजीशन पे बॉटम से टॉप जाओगे तो क्या होगा, सेवेंथ पे एप्लीकेशन लेयर। तो ये भी वही काम करता है, मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेवेंथ लेयर पे काम करेगा, मतलब जहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, है ना। बहुत सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर में, तुम लोग जानते होगे, DHCP वगैरह हो गया, HTTPS हो गया, SMTP है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप का प्रोटोकॉल, पॉप हो गया मेल वगैरह के लिए, रिसीव सेंड करने के लिए। ऑल आर वर्क एट द OSI सेवेंथ लेयर, राइट। And it is also used for the application architectures, this ELB. When we talk about the network load balancer, so it is used for the TLS, offloading, UDP, static IP addressing, है ना। ये सब UDP TCP ये तुम लोग पढ़े होगे, ये फोर्थ लेयर में, है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है सेकंड पॉइंट में, ऑपरेट्स एज OSI फोर्थ लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर द मिलियंस ऑफ request per second at ultra low latencies,
तो ये लोड बैलेंसर बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल होता है तुम्हारे डाटा को प्रोसीड कराने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, और जितने लोड जो नेटवर्क का लोड जो आएंगे ये सारे यहाँ पे बैलेंस हो जाते हैं। मतलब ट्रैफिक को जो है ज़्यादा होगा तो उसको कैसे लेटेंसी को रिड्यूस करना, कितना कितना ज़्यादा लू कर सकते हैं लेटेंसी, उस पर ये काम करता है ना। और एक टाइम में वेरियस रिक्वेस्ट आ रहे हैं फिर भी उसको बैलेंस कर देना, उसको जो है ह्यूज ट्रैफिक क्रिएट ना होने देना, लो लेटेंसी को पूरा रिड्यूस करके रखना, ये सारा काम जो होता है नेटवर्क लेयर पे होता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर के ऊपर होता है। गेटवे लोड बैलेंसर इट इज यूज फॉर द थर्ड पार्टी वर्चुअल अप्लायंस split using the GNEVE। ये एक्चुअली एक प्रोटोकॉल है दैट इज यूज बाय द थर्ड पार्टी वर्चुअल अप्लायंस, and it operates at OSI layer third जो network layer कहलाता है, and it is used to improve the security, compliance and policy control। इसके लिए गेटवे लोड बैलेंसर हम लोग यूज करते हैं। क्लासिक लोड बैलेंसर का काम क्या है, तो इट इज यूज फॉर द प्रीवियस जनरेशन EC2 क्लासिक नेटवर्क, एंड इट ऑल्सो ऑपरेट एट OSI लेयर 3 और 7। तो देखो ये दोनों लेयर पे ही काम करेगा, 3 पे जैसे नेटवर्क ये गेटवे काम कर रहा था, 7 पे एप्लीकेशन काम कर रहा था, वैसे ही ये दोनों पे ऑपरेट करता है क्लासिक लोड बैलेंसर। And it operates with the both layer, and then the network and the application layer, that you all know that 3 and 7 which type of layer is, and it is used for the upgrading to the other load balancer which is not visible. So just understand that it is used if upgrading to other load balancer is not visible। तो जब भी कोई लोड बैलेंसर मतलब कोई इंस्टेंसेस वगैरह अगर हो गया, वो सही से काम अगर नहीं करता है, तो उसको अपग्रेड करना या दूसरों से रिप्लेस करना या दूसरे लोड पे सेंड करना, ये भी काम जो है क्लासिक लोड बैलेंसर का होता है। तो अभी देखो लोड बैलेंसर का एक आर्किटेक्चर दिया गया है, यू कैन रेफर टू दैट। लाइक there is a request which is coming to the rules, like this is a listener and this will be your target groups, right? And here if you use that certificate manager like ACM जिसको बोलते हैं AWS सर्टिफिकेट मैनेजर, तो ये TLS सर्टिफिकेट जनरेट करता है, ऑथराइज करता है, और बेसिकली जो भी रूल्स जो तुम सेट करोगे, जो भी तुम्हारा रिक्वेस्ट होगा, जो कि क्लाइंट का रिक्वेस्ट होता है जनरली, तो वो लिसनर पे जाएगा, और फिर तुम्हारा टारगेट क्या है, उसके बाद तुम्हारा कॉम्प्यूट टारगेट पे हो जाएगा। बस तुमको कितना रिक्वेस्ट आया, या कितने अभी करंट में कितने इंस्टेंसेस रनिंग कर रहे हैं, किस टाइप का लोड बैलेंसर का जरूरत है। बैलेंसर मतलब ये नहीं कि खाली अब ये तुम्हारा EC2 को ही बैलेंस करेगा, नो, इट विल बी गो ऑन ऑल द 4 टाइप्स। इट विल लुक ऑन द एप्लीकेशन, इट विल लुक ऑन द नेटवर्क, इट लुक ऑन द क्लासिक, इट लुक ऑन दी वन मोर टाइप्स वर देयर दैट इज कॉल्ड द गेटवे, है ना। ये सारे पे फोकस करना है उसको, तब जाके वो तुम्हारा कंप्यूट होगा, तुम्हारा प्रोसेस मतलब कंप्यूट टारगेट को रीच करेगा, राइट। नाउ हियर यू सी देयर इज एप्लीकेशन लोड। देखो ये सारे लोड बैलेंसर के बारे में अब एक एक करके दिया हुआ है, ये तुम लोग गाइडेड ये से स्टूडेंट गाइड से तुम लोग इसको पूरा रेफर करना। एक एक मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग कंप्लीट करोगे। तुम्हारे पास सारे है डिटेल इसका स्टूडेंट गाइड में, उसको रेफर करना। सो हाईली अवेलेबल बाय यूजिंग द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड Amazon RDS मल्टी एजेंट मतलब मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्राउजर क्लाइंट कनेक्ट किया राउट 53 जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस जो डाटा है उसको प्रोसेस कराता है। अगर इनफ्रीक्वेंट है तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को जाएगा। अब बैलेंसर मल्टीपल बैलेंसर्स हैं, देखो यहाँ पे एक जो है वेब टायर टारगेट ग्रुप है, एक एप्लीकेशन टायर है, एक डाटा टायर है ना। तो वेब एप्लीकेशंस के लिए यहाँ से कनेक्ट करेगा। जो तुम्हारा स्टैटिक और डायनेमिक एप्लीकेशंस हैं जिसको तुमको लोड को डिवाइड करना है ना, मल्टीपल जोन के साथ, तो वहाँ पे अनदर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ऑपरेट कर रहा है, देखो इसको कनेक्ट करेगा दूसरे जोन को। और डाटाबेस वगैरह अगर ऑपरेट हो रहा है तुम्हारे इसमें सर्वर में, तो उसके लिए तुम RDS वगैरह को कनेक्ट कर सकते हो, या कोई और डाटाबेस टायर को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे RDS को लिया गया है, बेसिकली दे आर फोकसिंग ऑन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, so they are connecting with the relational database services। तो फॉर दैट यू कैन चेक विद द मल्टीपल जोन्स। तो एक जोन ये है AZ1 और ये AZ2 का है, देख सकते हो। और दोनों में ही जोन में ही ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगा हुआ है, और डाटाबेस जो है तुम्हारे इसको ऑपरेट कर रहे हैं डाटाबेस टायर के साथ। तो एप्लीकेशन टायर ग्रुप में क्या रहेगा, तुम्हारा एप्लीकेशन टायर के अंदर ऐप EC2 इंस्टेंसेस हो सकते हैं, और
वेब टायर में भी वेब इंस्टेंसेस तुम क्रिएट, तो इंस्टेंसेस जनरली हर जगह ऑपरेट होता है। एक्चुअली इंस्टेंसेस क्या है, सर्वर, जो भी एप्लीकेशन होगा सर्वर पे जनरली रन करते हो तुम एट द एंड, है ना। सर्वर बेस्ड हो सकता है या सर्वर लेस हो सकता है, लेकिन सर्वर तो रहेगा तुम्हारा, है ना। तो ये बेसिकली आइदर देखो, सर्वर बेस्ड क्या, जो तुम खुद मॉनिटर कर रहे हो वो तुम्हारे सर्वर बेस्ड हो गया। जो खुद तुम नहीं उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, जो सर्विस प्रोवाइडर पूरा हैंडल कर रहा है, तो वो सर्वरलेस, जो कि लेमडा वगैरह जो फंक्शन होता है एडब्ल्यूएस लेमडा, तो सर्वरलेस हो गया, है ना, इस टाइप का आर्किटेक्चर। क्योंकि सर तुम उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए तुम्हारे लिए वो सर्वरलेस है। मतलब तुम सर्वर से कुछ इंटरेक्शन तुम्हारा नहीं, तो वो सर्वरलेस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्वर नहीं है, सर्वर विल बी देयर बट यू आर नॉट मैनेजिंग एनीथिंग, दैट विल बी मॉनिटर एंड इट विल बी मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर साइड। तो इसलिए यहाँ पे जो है अ, हर जगह तुम देख सकते हो EC2 लगा हुआ है। EC2 इसलिए है क्योंकि वो एप्लीकेशन को तुम एक्सेस करो या वेब एप्लीकेशन को यूज करो या वेब टायर टारगेट ग्रुप रखो, हर केस में इंस्टेंसेस तो रहेगा ही रहेगा, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। बाकी तुम लोग जो है स्टूडेंट गाइड को रेफर करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, इसमें 2 लैब हैं, एक चैलेंज लैब है, एक गाइडेड लैब है, हम लोग करेंगे अगले क्लास में। एंड वी विल सी यू रिमेनिंग इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, else we'll end the meeting and we'll see you tomorrow. Hello, sir. Yes, tell me. Sir, could you please tell us about capstone project? मतलब उसमें करना क्या exactly? तो थोड़ा सा कैप्स्टोन बता प्रोजेक्ट, देंगे तो हम लोग देखो अभी से हो जाएंगे प्रिपेयर। देखो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट जो है, जैसे तुम लोग ये कर रहे हो ना, ये बेसिकली तुम लोग चैलेंज लैब करते हो ना, यस और नो, यस सर। उसी के जैसा ही है। तुम लोग अगर कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, लुको मैं एक बार इसको बता दे रहा हूँ, जस्ट वेट। अगर तुम लोग जाओगे कैप्स्टोन प्रोजेक्ट पे, ऐसे वो ऑप्शनल है, जो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो कर सकते हैं। लेट मी जस्ट ओपन इट। या दिस वन द डॉक्यूमेंट, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, इसको ओपन करना। ये वैसे ही है जैसे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तुम लोग करते हो ना, ये लैब, तुम लोग चैलेंज लैब करते हो, सेम जैसा ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग नहीं होगा। नाम दिया गया प्रोजेक्ट पे, बट इट इज वेरी सिंपल, यू कैन ऑल्सो कंप्लीट दिस। देखो ये क्या है बेसिकली, AWS एकेडमी क्लाउड आर्किटेक्चर 3 कैप्स्टोन प्रोजेक्ट ओवरव्यू। Throughout this course, you have completed hands-on lab. You have used the different AWS services and the features to create a compute instances, install the operating systems and the software, deploy code, secure the resources. You practice how to enable load balancing and auto scaling. देखो आज ही हम लोग जस्ट पढ़ रहे थे ऑटो स्केलिंग ELB कैसे enable कर रहे हो, हाउ टू किधर गया, एंड हाउ टू आर्किटेक्ट फॉर द हाई अवेलेबिलिटी to build the lab specific applications, ये सब तुमने किया है। In this project you have you are challenged to use familiar AWS resources or the services to build a solution without step by step guidance। जैसे चैलेंज लैब में करते हो, हर चीज का स्टेप नहीं दिया रहता है, बट फिर भी तुम तो करते हो ना, तो बहुत सारी चीजें नहीं रहता है, फिर भी यू आर ट्राइंग एंड यू आर डूइंग इट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, हर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा, आपको आपको कंप्लीट करना है। स्पेसिफिक सेक्शंस of the assignment are meant to challenge you on skills and that you have required that throughout the academic architecture course like ACA courses. By the end of this project you should be able to apply the architecture design principle that you have learned in this course to do the following: the create a database instance that has the PHP application 10 queries। तो देखो ये तुम लोग DB इंस्टेंस क्रिएट करना जानते हो, create and deploy the highly available PHP application Excuse me, sir. अक्रॉस मल्टीपल, एक मिनट रुको, मल्टीपल वेब सर्वर एंड अवेलेबिलिटी जोन्स, ये भी तुम लोगों ने किया है। अगर लोड लोड डिस्ट्रीब्यूशंस जो है ये अभी होगा, हम लोग अगला लैब करेंगे ना, तो उसमें है ये डिटेल में। सीक्रेट मैनेजर तुम लोग किया है ऑलरेडी। इंपोर्ट डाटा इनटू माई एसक्यूएल ये भी तुम लोग किया है। सिक्योर द एप्लीकेशन टू प्रिवेंट द पब्लिक एक्सेस टू द एप्लीकेशन सर्वर एंड बैकएंड सिस्टम्स, राइट। तो ये चीजें जो है आगे तुम्हारा सिक्योरिटी वाला पार्ट तो हमने कर चुका है, तो ये भी ऑलमोस्ट इसके कुछ पार्ट्स जो है तुम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है प्रीवियस लैब्स में।
उसी के बेस्ड जो है लैब एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और तुम्हारा जो है जो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे देखो, जब तुम लोग जाओगे इलस्ट्रेशन वगैरह पढ़ लेना, सिनेरियो वगैरह ये सब तुम लोग खुद एक बार रीड कर लेना डिटेल में। और यहाँ जैसे नॉर्मली लैब स्टार्ट करते हो ना वैसे ही चलेगा प्रोसीड्योर। यहाँ पे जाओगे क्रिएट अमेजोन आरडीएस माई डेटाबेस, कैसे क्रिएट करोगे देखो। तो यहाँ पे टिप्स वगैरह तो दिया है लेकिन स्टेप्स पूरे लिखे नहीं है। क्रिएट अमेजोन आरडीएस माई स्प्लेडर कैसे करोगे तुम जानते हो, माई आरडीएस को सर्च करोगे, मैनेजमेंट कंसोल विंडो को ओपन करना है, आरडीएस को सर्च करना है, माई स्कूल डाटाबेस को क्रिएट कर देना। क्रिएट डाटाबेस आता है, राइट क्लिक मारोगे, डाटाबेस को कुछ नाम वगैरह दे देना, यहाँ पढ़ लेना टिप्स क्या दिया गया है, क्या क्या चीजें उसमें यूज करना है। तो डाटाबेस सिक्योरिटी ग्रुप करना है तो वो क्रिएट कर देना। जब तुम पूरे लैब तुम लोग कर लोगे ना सारे मॉड्यूल्स, तो ऑटोमेटिकली कैप्स्टोन प्रोजेक्ट इज वेरी सिंपल। आई मीन I can say that it is not given the space, but the things they have asked in the capstone project, everything you have configured in the previous challenge lab in the guided lab. तो ये बहुत सिंपल है। You all should, I recommend you all should complete this capstone project as well. As per the concern of the course, it is not mandatory, but anyhow, I will recommend you to all should complete because only 5 steps are given, and accordingly you will get the 35 marks. Yes, tell me who was asking questions. बोलो। नहीं सर, वो मैं थोड़ा सा पानी पीने चला गया था, तो ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट कहाँ पे मिलेगा सर, वही ये पूछ रहा वही था। है तुम्हारे कोर्स में ही है। देखो ये जो तुम लोग का चल रहा है ना कोर्स अभी, एक मिनट देखो, लेट मी ओपन गो टू मॉड्यूल। तुम लोग जैसे नॉर्मली कोर्स के मॉड्यूल्स में जैसे जाते हो, जैसे एंड में है एकदम 16 17 मॉड्यूल के बाद। 17 का तो जरूरत नहीं है, ये तो ब्रिजिंग टू सर्टिफिकेशंस के बारे में बताया है तुम्हारा, कि क्लाउड सर्टिफिकेट जो लोग इसके बाद जो क्लाउड सर्टिफिकेशन ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उन लोग के लिए यहाँ से इसके बारे में डिटेल जा सकते हो स्टूडेंट गाइड के अंदर, उसके बारे में डिस्क्राइब किया मैंने, तुम लोगों को बताया भी है पहले भी, इसको भी जी सर। रेफर कर सकते हो डिटेल में। उसके बाद तुम्हारा आता है कैप्शन प्रोजेक्ट। ये कैप्शन जो प्रोजेक्ट है ये तुम्हारा बेस्ड ऑन चैलेंज एंड गाइडेड लाइफ पे ही बेस्ड है। यहाँ पे बस स्टेप्स दिए नहीं होंगे, हाँ इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन के में हर कैसे कॉन्फ़िगर करेगा वो नहीं दिया रहेगा, लेकिन ये दिया रहेगा कि आपको क्या क्या करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो सारे इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन, बट इट इज नॉट गिवन द कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स, बट व्हाट यू हैव टू परफॉर्म दैट विल बी गिवन इन दिस प्रोजेक्ट। तो वो सारे चीज तुम ऑलरेडी जानते हो, आरडीएस कैसे करना है, स्टोरेज कैसे क्रिएट करना है, नेटवर्किंग सर्विसेज कैसे एनेबल करना है, ईएलबी कैसे करना है, इंस्टीट्यूट इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है, एवरीथिंग यू नो, सो यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। अंडरस्टूड? सो वी विल जी सी सर। यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। तो तुम लोग अभी मॉड्यूल नंबर 10 पे हो, अभी हम लोग को 5 मॉड्यूल और खत्म करना है, उसके बाद कोर्स फिनिश हो जाएगा तुम लोग का। तो प्रोबेबली इस वीक के एंड तक हम लोग एटलीस्ट 13 और 14 पे तो पहुंच ही जाएंगे, और उसके बाद अगले वीक में फिनिश हो जाएगा तुम्हारा कोर्स। तुम्हारे सेमेस्टर क्लासेस जब स्टार्ट होगा तो एक दो दो तीन दिन में भी शायद हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तुम लोग को, बाकी डेज में तो फिर कंप्लीट ही हो जाएगा हमारा कोर्स। 20 से पहले हमारा फिनिश हो जाएगा, आई होप सो। 15 to 20 between, maybe 17 or 18 will be finished. We will see you on the next class, guys. ओके सर, थैंक यू। अच्छा सुनो ना, ये Recording stop.